Hello everyone and good morning. I hope everyone is good. So today in the class we will be revising current electricity through questions. Okay. So let's start doing this. So I have simply included some questions. We will be doing questions and then through questions we will be revising the concept. Okay. Chalo. Let's start with the very first question. This is the first one. I will be giving you time first, sufficient amount of time so that you can practice. Okay. This 1.5 hours you will be practicing solving. I will be helping in the process. That is all we will be doing. Okay. Let's start it now. Which formulas will come into use here? First thing is your KVL, that is Kirchhoff's voltage law, that you already must be knowing how to write it. Another one is, for calculating A, you will be requiring the formula for calculating equivalent EMF if cells are connected in parallel. So you all must be aware of it. It is E equivalent by R equivalent when cells are connected in parallel. Then it is E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3. And here there are three cells, so I am limiting this up to three. And 1 by R equivalent will be equal to how much? 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Okay? So this is how we are going to, this is the formula that you may find helpful in solving it. Do it now. Any answer if you got?
Okay, let's now do it together. Uh, you must have written, I mean, some equations, things and all. So now let's do it and come to the final answer. So if you look at A thing, find the potential difference between point A and B and current through each branch. So first we have to calculate potential difference between A and B. Okay? So if you look at this circuit, we can reduce this circuit to a single battery having certain resistance, right? Certain internal resistance. So let's first do that so that if we can, if we are able to reduce this whole circuit into this thing, then this whole will look like what? It will look like there is a R here, and then this whole circuit, we will be representing that with this. Okay? Sorry, like this. Done it. And then we are asked potential difference between A and B. Now you can clearly see if you are able to reduce it like this is an open circuit. This is not a closed circuit, so there is no current flowing in the branch, and hence potential difference between A and B will be equal to EMF of this cell. Okay? So basically, if we are able to calculate what is the value of E equivalent here for this condensed circuit, okay, then we will be able to say what is potential difference between A and B. So let's use the formula. E equivalent by R equivalent will be equal to how much? This will be equal to E1 by R1, that is your 1 by 1 plus 2 by something. What is this? No, R is always 1 and okay. E1 is 3. So this is 3 by 1. This is 2 by 1 and then this is 1 by 1. So this is 6 something. What will be the 1 by R equivalent? That will be 1 by 3. All three are in parallel. So R equivalent is equal to how much? Sorry, this will be your 3 basically. 1 by R equivalent will be 3. You know? So R equivalent is how much? 1 by 3. And from here, if you solve, E equivalent will be equal to how much? This will be equal to 6 into R equivalent and 6 into 1 by 3 and that will give you 2 volt. So first का answer हमें मिल गया. Find the potential difference between point A and B. So that will be 2 volt. ठीक है? In the given circuit. Now and the current to each branch. Now we have to calculate current in each branch. How we can go around it? जैसे आप ध्यान से देखो यहाँ पे across A and B potential difference is what? 2 volt. If I say this is point A, then this will also be called point A. Why? In terms of potential, I'm saying because between this point and this point, there is no potential drop because there is no current, right? So on this R, no potential is dropping. So in terms of potential, whatever potential is at this point, same potential is at this point. So if this point is called A in circuit, then this point can also be called A in circuit. ठीक है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि between this point and this point potential difference is how much? 2 volt. ठीक है? Now let's say current in this branch is I1, current in this branch is I2, and current in this branch is I3. Now you can easily calculate what is the value of I1 because you already know potential difference, that is 2 volt. So let's start from where? Let's start from A. So here you will write VA. मैं इधर की तरफ KVL लिख रही हूँ A से B by going through the first branch, top branch. So I will write like VA minus, no, I am going opposite to the direction of current. So VA plus I1 R1 minus E1 that is 3 volt is equal to VB. Like this I can write. ठीक है? So यहाँ से अगर आप लिखते हो VA minus VB can be written as 3 minus I1. ठीक है क्योंकि R1 is 1, VA minus VB is 2 volt and this is 3 minus I1. So I1 will be equal to how much? This is equal to 1 ampere. So this is 1 ampere. Similarly, you can calculate I2. I2 आप कैसे निकालोगे? Again, you will write VA and we are moving opposite to the direction of current. I2 R2 plus, sorry, minus क्या लिखोगे? E2. E2 is your 2 volt and this is equal to VB. Again,
VA minus VB is equal to how much? 2 minus I2 R2. Again, VA minus VB is 2 volt. So this will get cancelled with this. I2 will be 0. So this I2 is 0. This is 1 ampere. What will be I3? We need to calculate I3 now. अगर इसके लिए I3 के लिए अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं, I will be writing what? VA plus I3, R3 is 1 minus E3, that is your 1. This is equal to VB. Now VA minus VB is 2 volt and this equal to 1 minus I3. I3 is equal to how much? Minus 1 ampere. So direction is opposite of what I have taken over here. Okay? So this is this. Done hai? So answer will be what? 2 volt, 1, 0, minus 1. Let's check the answer first. So 2, 1, 0, minus 1. This is for the first case. What will happen in the second case? Second case में हमसे क्या कहा गया है? If R2 is short circuited and the point A is connected to point B, find the current through E1, E2, E3 and the resistor R. Now the case is like this. This R2 is short circuited. Short circuited का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो इस ब्रांच में R2 short circuit कहने का मतलब you are connecting it with a wire like this. And if it is getting short circuited, it means its resistance is vanishing. There will be no R2 there. ठीक है? So that will simply become a conducting wire. डन है? वो बन गया तुम्हारा कंडक्टिंग वायर. इसलिए मैंने डायग्राम को ऐसे बनाया. सो बी केस में हमसे ये कहा गया है R2 को शॉर्ट सर्किट कर दिया गया एंड देन A इज कनेक्टेड टू B. So outside also that's a complete circuit. And now you are asked to calculate same things or what? A is connected. Find the current through E1, E2, E3. Now you have to calculate current through E1, E2, E3. क्या कर सकते हैं हम बताओ? Circuit will be like this. What we can do? We can simply assume कि चलो यहाँ से current I1 निकला, यहाँ से current I2 निकला, यहाँ से current I3 निकला. And here current coming will be I1 plus I2 plus I3. Done. Now we have three variables, I1, I2, I3. We need to write three equations. So you will write KVL, you will get the answer. Other than KVL, we cannot do here anything. Any shortcuts we cannot apply because we cannot go like that. It's not possible. One thing you can do here, 1 volt or 3 volt को आप reduce कर सकते हो single battery में. क्योंकि 1 volt and 3 volt are in what? Harshita, in which case you are asking? In the previous question? Sorry, in the previous case, A. Okay, so previous case कुछ ऐसा था ना, यहाँ पे R था, यहाँ पे ऐसे बैटरी थी, यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस था. ठीक है? ओके, ठीक है, कोई नहीं. सो यहाँ पे ये R है एंड दिस वाज योर 2 वोल्ट एंड दिस वाज समथिंग 1/3 ओम, राइट? बिगर सर्किट का रिडक्शन ये था, है ना? एंड देन दिस वाज योर पॉइंट A एंड दिस वाज योर पॉइंट B. डन. सो मैंने ये बोला तुम लोगों से, यहाँ पे अगर आप देखो तो इस सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कोई करंट नहीं है. व्हेन देयर इज नो करंट, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू ईएमएफ. तो यहाँ पे जो इस और इस पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट. एंड दिस पॉइंट इज सेम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल. व्हाई? क्योंकि यहाँ पे देखो ए पॉइंट से तुमने चलना शुरू किया, तो यू स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम द ए पॉइंट. कोई पोटेंशियल ड्रॉप किया क्या? यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि करंट है नहीं, करंट इज 0. अगर पोटेंशियल गिर नहीं रहा है, इट्स नॉट चेंजिंग, इट मींस व्हाटएवर इज द पोटेंशियल ऑफ ए, सेम विल बी द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट. सो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल आई कैन से दिस इज पॉइंट ए. जैसे कंडक्टिंग वायर ऐसा होता है ना, ऐसा हुआ. मैम एक्चुअली वायर करंट थ्रू आर इज 0. व्हिच वन? एक्चुअली इन द सर्किट वायर करंट थ्रू मतलब कैपिटल आर में से करंट 0 क्यों है? लाइक बैटरी तो उससे लगी हुई है 2 वोल्ट की. कहाँ लगी हुई है? देखो ध्यान से मैम क्वेश्चन में. ई इक्विवेलेंट जो आ रहा है हमारा, हाँ जो ई इक्विवेलेंट आ रहा है, तो वो तो हाँ मैम एक तरीके से उससे सीरीज में है,
तो उधर हाँ, करंट होना चाहिए नहीं नहीं, आर करंट में। नहीं है ना, क्योंकि देखो ये सर्किट ओपन है ना, करंट फ्लो करने के लिए सर्किट को तो क्लोज होना पड़ेगा ना। एक सेकेंड, देखो करंट कब फ्लो करता है, यहाँ से इस तुमने बोला ठीक है 2 वोल्ट से सपोज करंट निकला, यहाँ से निकला ऐसे चला, अब ये वापिस यहाँ कैसे पहुंचेगा, रास्ता है? यस मैम, गॉट दिस पॉइंट। यस मैम। नहीं है रास्ता। तो तुम करंट तभी निकालते हो ना व्हेन, इफ यू आर गेटिंग इट रिलीज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, इट इट शुड कम टू द नेगेटिव टर्मिनल, देन ओनली तुम कहोगे कि यहाँ से करंट आई निकला। अगर रास्ता वापस जाने का नहीं है, इसका मतलब करंट निकलेगा ही नहीं। सो देर इज नो करंट इन द सर्किट। ठीक है, चलो ठीक है। सो इसलिए मैंने यस बोला मैम। था यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा। डन है। इस सर्किट को तुम लोग सॉल्व कर लेना, इसमें केवीएल तुम्हें लिखना है, सिंपल है। बट मैं कहूंगी 3 केवीएल लिख डालो, यू विल गेट द आंसर रादर देन कंडेंसिंग 2 into 1, क्योंकि अगेन I1 I3 निकालने के लिए इन दोनों ब्रांच को अलग अलग करना ही पड़ेगा। सो बेटर राइट 3 केवीएल एंड गेट इट डन। ठीक है, आई हैव रिटन द आंसर हियर, तुम लोग इसको कर लोगे। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन, लेट्स ट्राई दिस। टेक योर टाइम, डू इट। For this, I will be giving 2 minutes. ठीक है, क्योंकि if you are aware of this thing, you will be able to do it. That is why. Got it, everyone? Calculated? देखो कैसे करना है, सिंपल तुम्हें दिख रहा होगा, पैरेलल में दिख रहे हैं, है ना? ये दो बैटरीज हैं, दे आर इन पैरेलल। We have to simply write EMF and internal resistance of a single battery. ठीक है, we have learned formula, right? If battery looks like this, let me draw it. If battery looks like this, they're in parallel, right? Let's say this is E1, this is R1, this is E2, this is R2. What is the formula we write? We write E equivalent by R equivalent is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 here. And what will be 1 by R equivalent? That is 1 by R1 plus 1 by R2. By using these two, we will be able to calculate E equivalent, right? What is the difference over here? तुम लोग इस चीज को ध्यान से गौर करना, नोटिस करो। मैंने ये जब फॉर्मूला लिखा है, यू जस्ट सी हियर, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E1 इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E2। ठीक है,
एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एंड वन E1 का नेगेटिव इज कनेक्टेड विथ E2 का नेगेटिव. बट इफ यू लुक हियर केयरफुली, V2 का पॉजिटिव इज कनेक्टेड विथ द नेगेटिव ऑफ V1. ठीक है. एंड V2 का नेगेटिव इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव ऑफ V1. सो हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला नाउ? सो फॉर्मूला में तुम्हें सिंपल चीज ये करना है कि प्लस की जगह माइनस करना है, सिंपल. सो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला लगाओगे, व्हाट यू विल बी राइटिंग? सो ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट को आप क्या लिखोगे? सपोज कर लो मैं V1 को बड़ा मानकर चल रही हूँ, सो V1 बाई R1 माइनस V2 बाई R2 यू विल बी राइटिंग. ठीक है. एंड 1/R इक्विवेलेंट विल रिमेन सेम, क्योंकि रेजिस्टर्स पैरेलल में है, दे विल गेट एडेड लाइक पैरेलल. 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2. So that is equal to, I mean, R equivalent you can write as R1 R2 by R1 plus R2. So what will be the E equivalent here? E equivalent will be V1 R2 minus V2 R1, ठीक है, divided by R1 R2 into R equivalent, that is R1 R2 divided by R1 plus R2. So this thing will get cancelled, and answer, what will be the answer? V1 R2, V equivalent तुम्हारा आया V1 R2 minus V2 R1 divided by R1 plus R2. So this is going to be the answer. ठीक है. सो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए इंक्लूड किया सो दैट यू कैन मार्क द डिफरेंस कि हमें ऐसे फॉर्मूला कब यूज करना है, एंड व्हेन वी नीड टू इंक्लूड द नेगेटिव साइन, सो वी कैन डू इन दिस थिंग. ठीक है. चलो, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट लेट्स डू इट.
Got the answer? Anyone? No? Can't you see this geometry? I mean, if you have solved circuit, you must be aware of circuit looking like this. I mean, देखो यहाँ पे क्या है? We have to calculate basically what? Voltage का reading. So we have to calculate potential drop across this, right? Done it? So if you look here carefully, you can see this voltmeter has a resistance and its resistance value is 400 ohm. And this 400 ohm and this 400 ohm, they are in parallel. है ना? ये दोनों किसमें है? Parallel में है. Because they share the same potential difference. If this is point P, then this will also be point P. In terms of potential, if this is Q, this is also Q. So their potential difference is same. They are in parallel. So equivalent of 400 and 400 will be what? That will be 200. So I've written here this one as 200. And this is your what? This is your 100. इसको मैंने 100 लिखा. This is your 100 and this is also your 100 and this is your 200. ठीक है? अब देखो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगर नहीं दिख रहा तुम्हें तो एक काम करो, 4 पॉइंट लिख लो. जैसे पोटेंशियल के टर्म में वी हैव 4 डिफरेंट पॉइंट्स. This point is having one potential. This point is having potential different from A. That is why I've named it B. And this point has potential different from A and B. That is why I have named it C. And again, this point has a potential different from A, B, C. So D. Then, so we have we have how many points? 3 points. 4 points. So A, B, C, D मैंने ऐसे रख दिया. अब देखो A और B के बीच में we have one resistor connected 100 ohm. Between B and C, we have one resistor of 100 ohm. So I have connected it here. Between C and D, we have one resistor. This is of 200 ohm. And then between B and D, this is 200, right? So here you write 200. And between A and C, this one. So again, there is 100 ohm. And then between A and D, there is a battery connected. So simple. This is looking like a wheatstone structure. Now check if it is balanced or not. It is balanced, right? Because 100 by 100 in this arm is equal to 200 by 200. That is 1. So it is balanced. It means no current will flow in this. Done it? So DC arm will get removed from the circuit. And if you're removing DC arm out, then 100 and 200 will be in series. 100 and 200 in series. 200 plus 100 will become 300. This will also become 300. And then this 300 and 300 between point A and D, they are in what? They are in parallel. So 300 in parallel will become how much? 150 ohm. ठीक है. एंड हाउ मच इज द वोल्टेज इज योर 10 वोल्ट. सो करंट को आप क्या लिखने वाले हो? 10 by 150. सो करंट वैल्यू इज हाउ मच? 1 by 15 एम्पियर. ठीक है. नाउ द थिंग इज 1 by 10 15 ampere current will come out from here. It will reach here, and at point A it has two directions to go into. One arm has a total resistance of 300, another arm has total resistance of 300. So current will get divided equally. So here it will go 1 by 30 ampere, and in this arm also 1 by 30 ampere. Now what is the potential drop across 400? How you will calculate that? Batao. Hmm? Himansu, it looks like same. Yes. तुमने 2 रीडिंग मुझे दिया क्यों? क्वेश्चन में 2 चीजें पूछ रही है क्या? यस मैम, एक वोल्टमीटर वाली पूछी है और एक अक्रॉस रेजिस्टेंस वाली पूछी है.
तो मैम एज वोल्टमीटर रीडिंग ही तो 400 ओम के क्रॉस जो होगा वो होगा ना, दोनों का पोटेंशियल तो सेम होगा ना, देर इन पैरेलल। मैम शायद ऐसे पूछा है कि वोल्ट मीटर कितनी रीड करेगा और एक्चुअल में कितनी है, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी काउंट होगा ना। नहीं, तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया है, सिंपल देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस across the resistor of 400 ohm as will be measured by the voltmeter of resistance this. So this voltmeter is going to measure potential difference across PQ. So अगर तुम, मैंने बोला ना P और P सेम है, so इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप दिख रहा है will be same across the voltmeter, so that will be the reading of voltmeter. ओके मैम। Yeah. So answer you have got is correct actually, but आपने 6.6 वाला करेक्ट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 1/30 एम्पियर यहाँ से गया, अब व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट, लेट मी नो क्या होगा बताओ, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन पे ही निकाल लो, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। चलो एक काम करती हूँ, फिर से सर्किट को ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे तुम्हारा कितना था, 100 था, एंड दिस वॉज योर वोल्ट, दिस वॉज, आई मीन एक सेकेंड, this was something like this was 400, and then there was 400 like this, and then this, and then this is 400, and then this is your what, 200, this is 200। यहाँ पे करंट कितना आया, 1/15, यहाँ पे करंट कितना गया, 1/30, और देखो यहाँ पे भी 1/30 आया, सो इसके क्रॉस करंट कितना जाएगा, अगेन दे आर टू इक्वल रेजिस्टर्स 400 and 400, so here current will get divided into two part, like that you can see 1/60 ampere and here 1/60 ampere, done it? So what is the potential difference across this, it will be same across both, so 400 into 1/60, so if you calculate 20/6, that is your 10 by uh, sorry 40/6, 40/6, so that is your 20/3 वोल्ट, ठीक है। इतना करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली तुम 200 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल देते, 200 इंटू 1/30, सो दैट इज इक्वल टू 20/3 वोल्ट, सेम है, सेम ही आएगा, ठीक है। बट मैंने तुम लोगों को ब्रेक करके दिखाया सो दैट नो कंफ्यूजन हैपेंस। सो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी योर 20/3 वोल्ट, दैट इज व्हाट वी गॉट, डन है। सो जब भी तुम्हें सर्किट कंफ्यूजिंग लगे, तो सर्किट को सिंपल वे में ड्रॉ करने के लिए मैं जनरली क्या करती हूँ, आई मार्क पॉइंट्स ऑन इट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। सो अगर 4 डिफरेंट पोटेंशियल का पॉइंट्स है जहां से रजिस्टर्स निकल रहे, देन आई विल टेक 4 पॉइंट्स इन अ ब्लैंक स्पेस, देन आई विल स्टार्ट कनेक्टिंग रजिस्टर्स अक्रॉस द आर्म्स, देन इट बिकम्स क्लियर, मोर क्लियरर, ठीक है। चलो, नाउ डू दिस, टेक योर टाइम, डू इट। R2 इज 1 ओम इटसेल्फ, न्यूटन लिखा हुआ है, ओम होगा यूनिट, ठीक है।
Anshu, yes, that's great. सही है. Now let us do it together, ठीक है? I have given you enough time जिसमें तुम सोच सको, क्वेश्चन को समझ सको. If you have done that, it's enough. Let's do it now. So, what is given in the question? We have circuit like this, where this is resistance R1, which value is given as X ohm, and then this is R2, whose value is given as 1 ohm. Okay? And then we are having a wire AB of uniform resistivity as shown in the figure. Okay? The radius of wire varies linearly along its axis from this to this. Okay? So this wire will look something like this. अगर broad terms में मैं दिखाऊं, it will look something like this. So here its radius is how much? That is 0.2 millimeter. And here it is how much? It is 1 millimeter. This radius. So radius here is changing from 0.2 millimeter to 1 millimeter. Okay? A galvanometer connected to the center of the wire, 50 centimeters from each end along its axis, shows zero deflection when A and B are connected to a battery. ठीक है, यहाँ से A से जो ये वाला middle वाला point है, this is a middle point and this is at a distance of 50 centimeter. So in total, इससे हम ये समझ सकते हैं, this whole wire is of length 100 centimeter. ठीक है, so this is like this. Now we have to calculate the value of X. अगर तुम्हें जैसे देखो यहाँ पे हमें नल पॉइंट मिला है, यहाँ पे हमें जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है. एंड इफ वी नो रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, लेट्स से दिस पॉइंट इज O, if we know resistance of OA and if we know resistance of OB, we can simply write here with balanced Wheatstone bridge condition, that is your R1, that is your X by ROA is equal to 1 by ROB. This is the basic equation that we have to use, right? Now the question is, what is this ROA? What is this ROB? Since wire is not of uniform cross section, we cannot simply write कि half resistance हो जाएगा OA और OB का. We cannot say that. Length is half, but area of cross section is non-uniform. So what we need to do is, we need to calculate. ठीक है? We need to calculate resistance. So if you go on to calculating ROA, आप कैसे निकालोगे बताओ? So simply you, I mean, since area of cross section is varying, what you will do is at any distance x, जैसे यहाँ पे मैंने वाइड वेरिएशन दिखा दिया है. अगर यहाँ पे कोई भी यहाँ से A से स्टार्ट हो रहा है, at end A radius is 0.2 millimeter. So let's say from point A we are taking a small length of the wire dx, which is at a distance x from A. Then what will be the radius of cross section at this particular point? क्या होगा? So in our question it is said that radius is varying from 0.2 to 1 millimeter linearly. What does it mean? It means that, I mean, what is the change of this radius? Change of this radius is 0.8 millimeter, and this change has happened uniformly. So for 100 centimeter, how much change happened? 0.8 millimeter. So for 1 centimeter, how much change will happen? 0.8 by 100. Again, remember, unit को सही से लिखना. यहाँ पे this is in millimeter and this is in centimeter. So what will be the change that has happened for x length? तो x length के लिए तुम्हारा change क्या हो जाएगा? 0.8 by 100 into what is this? Okay, x, right? So what will be the radius at
at distance x. So radius का value क्या हो जाएगा? That will be r naught, which is 0.2 plus this change, right? So this is equal to 0.8 by 100 into x. So I have kept everything in millimeter. देखो ये 0.2 millimeter में है, 0.8 is in millimeter. This 100 is in centimeter, x is in centimeter, centimeter will get cut. ठीक है. अगर तुम्हें इसे वेरिएबल के टर्म में लिखना है, इसको r नॉट मान लो, then this will become 4r naught by 100 into x. Now what will be the resistance of this small section? तो अगर आप resistance लिखोगे इस small section का dr, that will be equal to rho length is dx divided by area of cross section. So that is equal to pi r का square. R is r naught plus 4r naught by 100 x का square. And for calculating total resistance, x will vary from 0 to 50. ठीक है. So this way we can do it. We can calculate then ROA. That will, if we integrate it, we will get ROA. So here I have done this for you already. So R1 यानी कि ROA मैं निकाल रही हूँ. This is the formula we got, right? by 100 था, मैंने यहाँ पे 10 to the power minus 2 लिखा है. So when you will integrate it, इंटीग्रेशन के लिए you know how to integrate it. इसको मैंने simply y variable मान लिया. So when I did it, I got something like this. यानी कि रो इंटू 10 to the power 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर नॉट, 2r0 बाई, दिस विल बी 2r0 बाई, सॉरी 2/3r0. ठीक है. तो r1 का वैल्यू हमारा कितना आया? 2/3r0 लाइक दिस. सो दिस विल बी रो इंटू 10 to the power 2 6 पाई r0. सिमिलरली अगर r2 निकालना है, हाउ यू विल इंटीग्रेट इट? r2 के लिए यू विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम 50 to 100, right? From here to here. Done. So for calculating ROP, limit will be from 50 to 100. X will vary from 50 to 100. So the same thing I have done here. 50 से 100 तक मैंने vary किया. Then you will get this. Now x by r1, r by r2. r1 और r2 का value हमें पता है. You put the value, you will get x equal to 5. So only trick was how to calculate resistance basically if the cross section of wire is not uniform, if it is something like this. तो वेरिएबल है तो हम कैसे निकाल सकते हैं. डन है. क्लियर है एवरीवन? एनी डाउट? किसी को डाउट है? नहीं. चलो नहीं है तो आगे बढ़ते हैं. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. ओके, आई नीड टू रिमूव इट. डबल डायग्राम चला गया है. एनीवे, लिव इट. ये एक्स्ट्रा रिडंडेंट डायग्राम है. ठीक है, इग्नोर इट. चलो मैं टाइमिंग लिख लेती हूँ जब से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया.
डन है। जैसे देखो, लेट्स नाउ डू इट। व्हाट्स द क्वेश्चन? इन द बैलेंस कंडीशन, वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फोर आर्म्स ऑफ ए Wheatstone bridge आर shown in the figure। ठीक है। The resistance R3 has a temperature coefficient of this much. If temperature is increased of R3 by 100 degrees centigrade, the voltage developed between S and T. So, if we are increasing the potential of, if we are increasing the temperature of R3 by how much? 100 degree, then what will be potential difference between S and T? Done it? So initially R1 is 60 ohm, R2 is 100 ohm, R4 is 500 ohm, and R3 is 300 ohm. R1, R2, R4 are not going to get affected. Temperature dependence diya nahi hai. R3 will get affected. And for R3, if you write resistance, new resistance after temperature has increased by 100 degree, तो क्या हो जाएगा? R3 का value R3 naught 1 plus alpha delta T you will be writing. So R3 naught is how much? 300. 1 plus alpha is how much? That is your 4 into 10 to the power minus 3. Delta T is how much? 100. So this will be equal to how much? 300 plus 300 into, this is your 4 into 10 to the power minus 300 into, this is, sorry, 4 into 10 to the power minus 4 है यहाँ पे, ठीक है ना? 0.0004 है, डन है? So 4 into 10 to the power minus 4, and this will give us how much? 300 plus 12, and that is 312 ohm. ठीक है? So new resistance here is 312 ohm. Now let's अब क्या होगा? हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एस एंड टी। कैसे निकाल सकते हैं? सपोज करो वी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम एस till T, then we will be able to calculate Vs minus Vt. But before that, we need to do current distribution. So there is one battery. Let's say current coming from here is I. And in this branch, the current that is going is I2. And in this branch, the current that is going is I1. I1, ठीक है? So how we will calculate Vs minus Vt? Let's start moving from Vs in this sense up to Vt. ठीक है? So मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगी। Vs करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हूँ यहाँ। आई विल राइट Vs plus 60 I2, and here I am moving in the direction of current, so I will write minus 100 I1 is equal to Vt, है ना? Vs से चलना स्टार्ट किया हमने, and the moment you will be reach up to T equal साइन करो equal to Vt. Like this you can write, है ना? KVL लिखे हो तुम लोग क्लोज लूप में, not in close loop, we can write like this, है ना? If it is closed loop, then T से चलकर वापस S तक आएंगे, then लिखेंगे equal to Vs again. Vs get cancelled in that case. So here Vs minus Vt is equal to how much? 100 I1 minus 60 I2. This is the thing, but we need to know I1 and I2. How we can calculate I1 and I2? Very easily, क्योंकि देखो KVL ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा यहाँ पे. If you talk about writing KVL in this branch, then there is only one variable in this branch, that is I2. Everything else is what? Everything else is known. क्योंकि यहाँ से करंट जब चलकर आएगा, यहाँ से करंट तो इधर ही जाएगा, है ना? इधर जाने का कोई रास्ता नहीं है. इधर से गया तो वापस वो नेगेटिव. देखो अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन में तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो, तो मैं फिर से तुम्हें बता दूं, यहाँ पे डायग्राम से कंफ्यूज नहीं होना है. एस और टी के क्रॉस ये बी इंडिकेटेड है. दिस इज बेसिकली ड्रॉन टू शो कि यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एस एंड टी. यहाँ से जो भी करंट आई निकला, बॉटम के पास करंट आई आना चाहिए. करंट तुम्हें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है. मैंने इधर I2 भेज दिया, इधर I1 भेज दिया. नाउ व्हाट विल हैपन हियर? अगर यहाँ से तुम I2 को इधर कहीं भेजते हो, जो कि कनेक्शन है ही नहीं एक्चुअली, ये लाइन है नहीं एक्चुअली, बट बाय द वे तुम कंफ्यूज हुए और तुम भेजते हो करंट को. यू जस्ट सी हियर, करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, वापिस से फिर मतलब कैसे भेजोगे? फिर ऐसे जाएगा, डन है. बट एक सेकेंड, यहाँ पे ये वाला कनेक्शन है ही नहीं. वी डोंट नीड टू डू दिस.
ठीक है, अगर तुम लोग कंफ्यूज यहाँ पे हुए हो तो लेट मी टेल यू, एस और टी के बीच में कोई कनेक्टिंग वायर नहीं है, यहाँ पे ये शो किया है जस्ट बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस। तो यहाँ से आई टू को मैं इधर सेंड करूंगी ही नहीं, सिंपल है, आई टू को इधर आने दूंगी, एंड देन आई टू विल कम हियर, एंड आई वन फ्रॉम हियर, it won't go this side because that's not part of circuit. Current इधर जाएगा I1 and again it will come here I1. I1 plus I2 will become I and it will reach the negative terminal. So now to calculate I1 and I2, what you need to do is you need to write KVL individually. लिख सकते हैं बहुत इजीली। So मैंने यहाँ पे लिखा है, इस आर्म में लिखो आप KVL. So what you will write, अगर यू आर गोइंग टू राइट इन दिस आर्म, बी से स्टार्ट करो, मैंने इस पॉइंट को पी लिया है, पी से स्टार्ट करो। सो वीपी -60 I2 है ना, वीपी -60 I2, और यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में यहाँ भी चल रहे हैं -312 I2, और फिर से प्लस होगा, प्लस 50 वोल्ट इक्वल टू वीपी। this got cancelled, we got I2. Similarly we will write KVL in this, we will get I1, then we will put the value of what, I1 and I2 over here to calculate Vs minus Vt. So that also I have done here. Vs minus Vt is how much? 100 I1 minus 60 I2. So if you will put it, you will get this as the answer. ठीक है, so circuit was simple. Circuit हमारा ऐसा ही था, ये था, यहाँ एक बैटरी थी, then there was this resistor, and then there was this, and then there was this. There was this point S and this point T. We were required to calculate potential difference between S and T. This was the circuit. Okay, done. Chalo. Now do this. Your time starts now. Take your time, do it.
Let us understand it now. See here, in order to measure the internal resistance R1 of a cell of EMF E, meter bridge of wire resistance R naught 50 ohm. So resistance of this meter bridge wire is given as 50 ohm. Okay, total. And the resistance of R naught by 2, here it is. Another cell of EMF E by 2 and a galvanometer is connected as shown in the figure, where we are getting null point. We are getting null point at 72 centimeter. So this distance is 72. When nothing is given in question regarding what is the length of meter bridge, we simply take the length of meter bridge to be equal to 100 centimeter. So if this is 72 centimeter, then this will be how much? 100 minus 72 करोगे आप. This will be equal to 28, right? Yes, this is your how much? 28 centimeter. Now, if there is null point happening at point P, what does it mean? Null point का simple significance है, there won't be current flowing in this arm. I mean, there is no current flowing through the galvanometer. It means there is no current flowing in the galvanometer arm. So, no current in this circuit. Okay? It means now if I at the null point situation, if I distribute current, let's say current I is coming out like this, current will go like this, this. It won't go into the galvanometer arm because deflection is 0. Current will be like this. So what will be the value of current if you calculate? So value of current here will be equal to E by, this is a single loop circuit, है ना? Single loop circuit है, यानी कि everything is in series. Current is not getting divided anywhere. It is simply moving in the same loop. So this loop has resistance here R1, here R0 by 2, and here this complete is R0. That complete meter bridge wire is of resistance R0. That is equal to 50 ohm. So this is 50 ohm. This will be 25 ohm. So total 75 ohm plus R1. So current is 75 plus R1. E by 75 plus R1. This is the current flowing. We have to calculate R1. अब देखो और क्या यूज कर सकते हैं हम. So अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर आर्म को ध्यान से नोटिस करो. So if you see here, if there is no current flowing in the galvanometer, it means what? ये जो ब्रांच PQ है, इसका ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस क्या जाएगा? जैसे देखो PQ को मैं ड्रॉ करती हूँ, QP को मैं ड्रॉ करती हूँ. It looks like this. It looks like this, right? There is a small resistance R. There is a E by 2 volt of battery, and then there is galvanometer, and then there is this, nothing, right? This is Q, this is P. So if you look at it carefully, what will be the potential difference between Q and P? Q will have lesser potential than that of P. Since it has a battery in its arm, there is no current. Potential difference Vp minus Vq, if you write here, is equal to 2 volt. लिख सकते हैं, that will be equal to EMF of the circuit because there is no current flowing through it. So this is equal to 2 volt. And if you see here, P and Q potential और किसका हो सकता है? Sum of potential on R0 by 2 plus sum of potential on this length. दिख रहा है तुम लोगों को? जैसे इस सर्किट को अगर मैं फिर से ड्रॉ करूं तो आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस. यहाँ पे हमारा E2 था, ये R था, and then this is R0 by 2, and then this was the balance point P, and here there was a register which will be resistance of length equal to 28 centimeter. We will calculate it, and then here it is this, and then this was the branch. ठीक है, इसको भी ऐसे ही ड्रॉ करती हूँ. ठीक है, लेट्स नॉट ड्रॉ इट फॉर अ व्हाइल. अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं. So if you look at it like this, ये तुम्हारा Q था, ये तुम्हारा P था. So what will be potential difference between P and Q? It will be potential drop on this plus potential drop on this, or potential drop on this plus potential drop on this. क्योंकि if you will move from P to Q, you will write Vp. करंट ऐसे जा रहा था, माइनस आई, लेट से इसका वैल्यू R1 है, माइनस आई R1, लेट से करंट तो पता है इसका रेजिस्टेंस है R0 by 2, सो माइनस आई R0 by 2 इक्वल टू VQ.
सो वीपी माइनस वीक्यू अगर आप लिखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, आई R1 plus R naught by 2 and VP minus VQ we already know that is equal to 2 volt. डन है। तो यहाँ से आप इसको निकालो, R1 का वैल्यू निकालो। 100 सेंटीमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दैट इज 50 ओम। सो सिंगल के लिए कितना होगा, 50/100। सो हाउ मच विल बी फॉर योर 28 थिंग, कितना होगा बताओ, दिस विल बी योर 14 ओम। ठीक है, सो दिस इज योर 14 ओम। अब यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करो, आई इंटू R1 कितना है 14, R0/2 क्या है 25, 14 प्लस 25 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 39। सो 39 I एंड दिस 39 I इज इक्वल टू 2 वोल्ट। आई का वैल्यू अब आप पुट कर दो, आई कितना था हमारा, ई बाई हाउ मच वी गॉट, 75 plus R1, 75 plus R1, this is equal to 2। तो if you राइट हियर, ई हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है, ई का वैल्यू गिवन है क्या, ओके इट्स नॉट गिवन, ओके दैट इज नॉट 2 वोल्ट, दैट इज ई बाई 2 बेसिकली, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती किया, दिस इज नॉट 2 वोल्ट राइट। पता नहीं मैं 2 वोल्ट क्यों लिख रही हूँ बार बार, तुम लोगों ने भी नहीं बताया, मैंने कैसे लिख दिया यार, ये ई बाई 2 है ना, बीपी माइनस बीक्यू, दिस इज ई बाई 2 सॉरी। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, ई बाई 2, values are not given right, that was e by 2, so यहाँ हो गया e by 2, this will get cancelled and 75 plus R1 is equal to 78, so R1 is equal to 3 ohm। ठीक है, everyone clear? सो इस आर्म को हमें सही से पढ़ना है, सर्किट को जितने प्यार से और टाइम देकर सही से देखोगे ना, उतनी चीजें तुम्हें दिख जाएंगी। ठीक है, सो गौर से देखो, सही से करो, यू विल गेट द आंसर्स। नाउ लेट्स डू दिस, वी विल डू इट इन वन इजी वे। ठीक है, ऐसे तो हम केवीएल लिख सकते हैं, बट यू कैन ऑल्सो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज पैरेलल दोनों को कंबाइन करके भी कर सकते हो। सो आई विल गिव यू सम टाइम, यू लुक एट द सर्किट, सॉल्व करने की कोशिश करो। सो हियर इज योर टाइम, है ना, मैं टाइम भूल जाती हूँ ट्रैक करने के लिए, जस्ट रिटन इट।
Let us now do it together. So question क्या है? We have circuit given and we have to calculate potential difference between B and D, and then we have to calculate potential across the terminals of cells G and H. ठीक है? तो सिंपलेस्ट वे जो हमारे दिमाग में जाएगा कि चलो ठीक है, करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. सो अगर तुम्हें करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कोई भी एक सेल से करंट को निकाल लो. आफ्टर दैट you simply distribute at branches, write KVL, you will get the answer. But हाउ एल्स वी कैन डू इट, किस तरह से और कर सकते हैं हम? जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ई बैटरी और ये एफ बैटरी, दिस टू आर इन सीरीज, एंड टू एंड दे आर कनेक्टेड. एंड हाउ वी कंबाइन सेल्स इन सीरीज, अगर आप देखो तो वी जस्ट चेक फॉर द करंट ओरिएंटेशन. दिस ई सेल हैज टेंडेंसी टू सेंड करंट इन दिस डायरेक्शन, दिस एफ सेल हैज tendency to send current in this direction. They are oppositely directed, and that is why, मीन्स एक करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंड कर रहा है और दूसरा क्लॉकवाइज. तो नेट ईएमएफ इन सीरीज तुम क्या लिखोगे? ईएमएफ ऑफ ई माइनस ईएमएफ ऑफ एफ, और जो भी बड़ा है उससे छोटे को घटा दो. सो ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 वोल्ट. एफ का वैल्यू क्या है? 1 वोल्ट. सो ई का ज्यादा है, सो 2 से 1 को माइनस करो. कहने का मतलब कि जो ये वाला ब्रांच है, इस ब्रांच के लिए जो तुम नेट बैटरी लिखोगे उसका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा होगा, ई के जैसा होगा. ठीक है? एंड यहाँ पे यू विल बी राइटिंग 1 वोल्ट, and total resistance, internal resistance will get added because they are in series. So here you will be writing what? R1 plus R2. What is its resistance value? 2 ohm, and this is 1 ohm, so 3 ohm. So ये दोनों मिलकर E equivalent कितना हो गया? 1 volt, 3 ohm. Similarly, you check for G and H. G has tendency to send current in this direction, H in this direction, oppositely directed. G has a potential of what? 3. This is 3 and this is 1. So net potential will be how much? 3 minus 1, 2. And it will be in which sense? It will be dominated by G. That is, G जिधर करंट सेंड कर रहा है, और जी बैटरी का जैसा साइन है वैसा नेट बैटरी का साइन हम लिखने वाले हैं. तो हियर इट विल बी 3 minus 1 वोल्ट. ठीक है? एंड आर इक्विवेलेंट विल बी हाउ मच? 3 plus 1, that is 4. सो वी आर गेटिंग 2 बैटरीज. अगर इसको मैं यहाँ पे बनाऊं तो मैं ऐसे बनाऊंगी, दिस इज बी. ठीक है? हो जाती. ओके, आई एम नॉट एबल टू राइट. ओके, सॉरी, just give me some time. ठीक है? अगर आप सर्किट बनाओगे तो कैसे बनाओगे बताओ? A and B, B and D is this, and then from D to, between D and B there is one battery. बैटरी का साइन ऐसे रखोगे कि करंट विल फ्लो इन दिस सेंस. तो इसलिए मैं बैटरी को ऐसे रखूंगी, like this. So this is your how much? 1 volt, 3 ohm. And here you will keep battery in such a way that current will flow in this sense. ठीक है? So let's keep battery like this. And then there is internal resistance also. So this is your how much? 2 volt, 4 ohm. I reduced it like this. ठीक है? इसको यहाँ पे क्लियरली तुम्हें दिख रहा है, दिस बैटरी एंड दिस बैटरी दे आर इन पैरेलल. सो आई हैव डन द सेम थिंग हियर. पहले इनको रिड्यूस किया. ठीक है? एंड आफ्टर दैट इसी सर्किट को ऐसे लिख सकते हैं. सो वी कैन सी क्लियरली हियर, these two are in what? These two are in parallel. So let's reduce this parallel circuit. और parallel में भी कैसे parallel में है? ध्यान से देखो, this positive is connected to negative of this. तो E1 by R1 plus E2 by R2 नहीं करोगे, E1 by R1 minus E2 by R2 करोगे. ठीक है? And then you will write E equivalent. So I have done here E1 by R1 minus E2 by R2. E1 is what? 2, 2, 4 है ना ये? This is your 2, 4 and this is your 1, 3. ठीक है? So 2 by 4 minus 1 by 3, 1 by 6. R equivalent is 12 by 7. So E equivalent अगर आप निकालोगे 2 by 7 volt आ रहा है. ठीक है? What will the diagram look like now? So now you have single battery. इन दोनों को हमने एक बैटरी से रिप्लेस कर दिया. अगेन साइन को प्रॉपरली देखना. दिस इज ऑफ 2 वोल्ट, सो साइन इसका डोमिनेट करेगा. सो दैट इज आई हैव रिटन हियर लाइक दिस. This is your point B, this is your point D. Current will flow from B to D.
Now its voltage is 2 by 7 volt. Resistance is how much? 12 by 7 ohm. And this circuit is simple like this. This is single loop circuit. है ना, single loop है. So everything is in series. And here 2 ohm and here 12 by 7 ohm. So R equivalent इस circuit का आप क्या बोलोगे बताओ. 2 plus लिखोगे आप 12 by 7. So that will give you how much? 14 plus 12 and that is equal to 26 by 7 ohm. ठीक है, इतना हुआ. Now if this is R equivalent of this whole circuit, what will be the current getting drawn out of this battery? So current को आप क्या लिखोगे? Potential difference 2 by 7 divided by 26 into 7. So this is going to give you how much? 2 by 26. Am I right? Yes. So this is equal to how much? 1 by 13 ampere. What will be the potential difference across B and D? So potential difference across B and D is what? This same current will go through 2 ohm. Done it? So potential difference 2 into 1 by 3, that 1 by 13, that is 2 by 13 volt. So first का आंसर हमारा क्या होगा? Let's check the answer. Yes. First का आंसर होगा तुम्हारा 2 by 13 volt. अब हमें क्या करना था? अब हमें ये करना था, हमें ये बताना था कि what will be the potential drop across G and H, across this and across this. How we will solve it now? Somehow, if we are able to calculate what is the current flowing in this arm, that is in BC, DCB arm, then we can easily calculate. And how easily we can calculate current flowing in this arm? जैसे देखो B and D के क्रॉस हमें करंट ऑलरेडी पता है, ये करंट हमें पता है ना, कितना है? 1 by 13 एम्पियर. ठीक है, लेट्स से करंट गोइंग हियर इज I1. डन है. अगर इसके थ्रू करंट I1 जा रहा है, राइट KVL नाउ. सिंगल KVL यू विल बी राइटिंग, I1 यू विल बी गेटिंग. अगर मैं यहाँ पे लिखूं KVL, आई विल राइट VB माइनस 2 by 13 प्लस 3 और माइनस 3I1, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी 3 है. और यहाँ पे क्या होगा? -1 माइनस I1 and this is equal to VB. Cut कर दो. What is the value of I1 we are going to get? +3 -1 +2. So 4I1 is equal to how much it will be? 2 minus 2 by 13. And this is your 24 by 13 it looks like. है ना? 4I1. So I1 कितना हो गया तुम्हारा? I1 हो गया 6 by 13 ampere. So current is 6 by 13 ampere. In which branch? In the branch BCD. ठीक है. अब you can easily calculate potential difference across G. G के क्रॉस potential difference क्या होगा? बैटरी के क्रॉस अगर करंट फ्लो कर रहा है, how you write potential difference? E minus IR. So here E is 3 minus I is how much? लेकिन फिर भी केयरफुली लिखना, क्योंकि साइन में डिफरेंस आ सकता है. डायरेक्टली ये फॉर्मूला मत यूज कर देना, गलत आ जाएगा. क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल सेल नहीं है, ये एक सर्किट का पार्ट है. सो बेटर इफ यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जी, राइट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड सी. सो डी से चलो सी तक पहुंचो. आई विल राइट इन द नेक्स्ट टू द लास्ट स्लाइड. यहाँ पे मैं लिखती हूँ. ठीक है. सो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं तो वी डी +3 माइनस 3 into current, that is 6 by 13 is equal to VC. So VD minus VC is equal to how much? देखो VD minus VC मैंने किया है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को घटा रही हूँ, ऐसा दिख रहा है, या whatever it is, VD minus VC. Let's calculate it first. So if I do what value I am going to get, this will become your 18 by 13 minus 3. So 18 minus 39, that is minus 21 by 13. So basically VC minus VD, that is your 21 by 13. क्योंकि इसका पोटेंशियल ये बड़ा है ना, पोटेंशियल टर्मिनल डिफरेंस निकाल रहे हो, so you need to calculate VC minus VD, that is 21 by 3.
सिमिलरली यहाँ पे है ना, इसका अगर जी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है मीन्स वीसी माइनस वीडी यू हैव टू कैलकुलेट। एच का निकालना है मतलब वीसी माइनस वीबी तुम्हें निकालना है। तो चलो ट्रैवर्स करो, वीसी -1 -1 इंटू करंट फ्लोइंग, करंट कितना था 6/13 इक्वल टू वीबी, यही दिख रहा है। नाउ व्हाट विल बी योर वीसी माइनस, ये कितना हो जाएगा 13 + 6/13 इक्वल टू वीबी। अब आप ध्यान से देखो वीसी माइनस वीवी कितना आया 19/13, ठीक है। सो आंसर विल बी हाउ मच 21/13, यस, एंड देन 19/13, सो वी गॉट, ठीक है। नाउ डू दिस एंड करेक्शन का क्वेश्चन है, यू शुड नो एंड करेक्शन क्या होता है। लेट्स डू इट, आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। For this, I will be giving you just 2 minutes. If you know end correction, यहाँ पे calculation भी ज्यादा नहीं है, so you will be able to do in that case. Read करो क्वेश्चन को। हिमांशु, यस, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड। एंड करेक्शन का सिंपल मतलब ये है कि एंड्स में, एंड्स के रीडिंग में उतना कम है, ठीक है। क्योंकि देखो जो पोटेंशियल, कौन सा वायर है ये, मीटर ब्रिज है ना, मीटर ब्रिज का जो वायर होता है यहाँ पे क्लैम्प्ड है, यहाँ पे क्लैम्प्ड है। एंड व्हेन यू आर यूजिंग मीटर स्केल टू मेजर इट, व्हाट मे हैपन, क्लैम्प पोर्शन के पास का जो रीजन है वायर का, दैट मे गेट आउट ऑफ द नोटिस, ठीक है, उसमें रीडिंग कम आने का चांस है, क्योंकि यहाँ पे मीटर स्केल रख रहे हो, मे बी एंड्स के साइड वाले पॉइंट्स को हम अच्छे से मेजर नहीं कर पा रहे, डन है। सो वट एवर मेजरमेंट यू आर गेटिंग दैट इज लेस, so if end correction is given, it means you need to add that value to get the correct one, done it. So what is given here, there is a meter bridge setup shown in the figure to determine an unknown resistance x using a standard resistance 10 ohm. The galvanometer shows null point when tapping key is at 52 centimeter mark. So यहाँ पे मार्क, ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 52। ऑलवेज वी मेजर डिस्टेंस फ्रॉम ए, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सो इफ इट इज गिवन नल पॉइंट इट हैज 52 सेंटीमीटर, इट इज गिवन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो दिस इज 52 एंड अनदर वन, दिस डिस्टेंस विल बिकम हाउ मच 48, ठीक है। टोटल मेकिंग 100, अच्छा नहीं, वो भी गिवन है शायद, गिवन है क्या, नहीं, ठीक है, तो 48 लेकर चलिए। The galvanometer shows null point when tapping key is at 52 centimeter mark. The end corrections are 1 centimeter and 2 centimeter. So here end correction is how much? 1 centimeter, and here how much? 2 centimeter. So overall this distance will become how much? 53 centimeter, and this distance will become how much? 50 centimeter. Now use the formulas plainly. So x by 53 will be equal to 48 by 50. You will get the answer. X का value will be 10.6 ohm.
ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली लेंथ आई हैव रिटन बिकॉज लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. यहाँ पे क्या लिखोगे, रो एल बाई ए. हियर ऑल्सो रो एल बाई ए. area of cross section throughout is same of the wire, nothing is given like that. Wire is of same material, row is same, so everything will get cancelled. That is why I simply wrote the length. Now do this question. Again, this question is not that difficult, you just need to read it carefully. So carefully read करो और मुझे बताओ क्या correct लग रहा है. ठीक है, so take your time. Again, I will be giving you time, don't worry. So okay, 28 तक चलते हैं. सिर्फ पढ़ने में ही टाइम लगेगा तुम्हें, कैलकुलेट कुछ करना नहीं. So it's easier. Do it. Himanshu, one is correct, another one is incorrect. First one is incorrect. So तुम ध्यान से देखो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, it's breaking up randomly at any random location. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रीड करो. रैंडम लोकेशंस पे ब्रेक कर रहा है. So if you look carefully here, there is a bulb. It has a filament made of tungsten, and that is basically heated to high temperature. So this is heated to high temperature. ठीक है, by passing electric current through it. Electric current is passing through it. And this bulb is powered at constant voltage. ठीक है. Now what is happening? Hot filament, anything hot will emit radiation. Anything greater than temperature 0 Kelvin will emit radiation. We already know this, right? So this is also going to emit radiation. The filament is also observed to break up at random locations. So filament का कुछ location है certain length तक, and that is randomly breaking at any location after a sufficiently long time of operation due to non-uniform evaporation of tungsten from the filament. Non-uniform evaporation हो रहा है. Basically यहाँ पे जो heating हो रही है ना, that heating is not constant throughout, and that is why randomly it is breaking, randomly evaporating. किसी लोकेशन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, इवेपोरेट कर गया. ठीक है, सो टेम्परेचर इज नॉट, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट uniform over the tungsten filament. First thing. Now, what are the statements? The temperature distribution over the filament is uniform? No, because it's, I mean, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना,
long time due to non-uniform evaporation of tungsten. Non-uniform evaporation हो रहा है, and also at random locations it is breaking. Break is कहाँ पे आएगा? If बहुत ज्यादा heat हो गया, it will break. ठीक है, सो रैंडम लोकेशन पे ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं है, अदरवाइज कंटिन्यूअसली उसको ब्रेक, इवेपोरेशन भी यूनिफॉर्म होता, और ब्रेक अगर एक जगह पे कर रहा है तो सारे ही ब्रेक कर जाते। ठीक है, सेकेंड वन, द रेजिस्टेंस ओवर स्मॉल सेक्शन ऑफ फिलामेंट डिक्रीजेस विद टाइम, नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमेशा टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, तो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। Filament emits more light at higher band of frequencies before it breaks up. Yes, क्योंकि आप लोगों ने विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा है, जो कि ये कहता है if temperature of body increases, then wavelength at which we get the maximum intensity of light will decrease. So जैसे जैसे गर्म करते जाते हैं, कलर येलो से ब्लूइश होता जाता है। ठीक है, सो हायर होगा, higher band of frequencies, yes. The filament consumes less electrical power towards the end of the life of the bulb. So power को आप क्या लिखते हो? पावर को आप लिखते हो ना वी स्क्वायर बाय आर लिखोगे। आई स्क्वायर बाय आर यहाँ पे पावर नहीं लिख के कंपेयर कर सकते, क्योंकि आई हियर इज अ वेरिएबल। ठीक है, आई इज ऑल्सो वेरिएबल, आर इज ऑल्सो वेरिएबल। लेट्स राइट पावर इन सच अ वे कि देर इज ओनली वन वेरिएबल इन दैट केस। दिस इज I mean, what is the question? लेस इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम कर रहा है ऐसा पूछ रहा है ना, तो वोल्टेज तो हमने क्या रखा है, वोल्टेज हमने कांस्टेंट रखा था। ठीक है, आर क्या हो रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, सो पावर कंजम्पशन विल डिक्रीज। आई स्क्वायर आर को हम इसलिए नहीं लिख सकते कि कंपेयर करने के लिए फिर तुम्हें आई को भी चेक करना पड़ेगा, आर को भी चेक करना पड़ेगा, सो इट्स बेटर ब्रेक इट इनटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इनटू आर, सो वी स्क्वायर बाय आर, दैट इज व्हाई आई डिड दिस, सो सी एंड डी। ठीक है, चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। मीटर और वोल्ट मीटर का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा, सो वी विल डू दिस आफ्टर दैट वी विल लीव। ठीक है, चलो डू इट। एक सेकेंड, आई विल गिव यू 2 मिनट, 2 मिनट में करो, उसके बाद आई विल डिस्कस। ओके, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, galvanometer gives full scale deflection with this much current. So full scale galvanometer looks like what? There is a pointer, right? Then there is a screen marked as certain angles. Full scale deflection means when no current is flowing, it is at zero mark. For full scale deflection current, there will be so much current that this mark will move from zero to maximum. So that is indicated by letter IG. So IG is your full scale deflection current, and this is equal to here how much? 0.006. Okay. Now by connecting into a 4990 ohm resistance, it can be converted into voltmeter. How we convert galvanometer to voltmeter? So galvanometer को अगर voltmeter में convert करना है, we connect a high resistance in series.
So here this is 4990 ohm, and this is galvanometer. Let's say its resistance is Rg. So galvanometer will look like this. This is galvanometer. I'm not shunting it, sorry. This whole system that I have drawn is galvanometer. यही है galvanometer तुम्हारा, ठीक है। और इसकी रीडिंग मैक्सिमम कितनी होनी है? 30 वोल्ट। सो मैक्सिमम ये जो रीड कर रहा है वो कितना है? 30 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? Maximum voltage reading will be for maximum amount of current going through the galvanometer, that is Ig. So here Ig into Rg plus 4990 into Ig will be equal to 30. ठीक है, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? Rg निकाल सकते हैं। अब देखो Ig का वैल्यू हमें पता है ना, दैट इज हाउ मच? 0.006 इंटू Rg होगा, दिस इज दिस प्लस 4990 Ig. हिमांशु, यस, वेरी गुड। सो दिस इज इक्वल टू Ig इंटू क्या लिखोगे? 6 इंटू 10⁻³ दिस इज इक्वल टू 30। एग्जैक्टली इसको सॉल्व करके देखना Rg कितना आता है। यू विल कैलकुलेट Rg फ्रॉम हियर। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, it now it we are connecting this resistance to get a meter. A meter हम कैसे बनाते हैं? galvanometer से we connect a small resistance in parallel. So its range is 1.5 ampere. So for range of ammeter, 1.5 ampere it is. For this value of current, here current going will be Ig, because this is the maximum current that ammeter can measure, and that will happen for Ig going into galvanometer. So current coming here will be I, that is 1.5 minus Ig. ठीक है, सो Ig का वैल्यू हमें पता है 1.5 भी, और I का वैल्यू भी पता है। अब यहाँ पे देखो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, सेम वोल्टेज विल बी अक्रॉस इट। So S into 1.5 minus Ig value is how much? That is 6 into 10⁻³ and this will be equal to how much? Ig, that is again 6 into 10⁻³ into Rg. Rg यहाँ से मिल चुका है, so S मिल जाएगा, that is shunt resistance, and shunt का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2n/249। यहाँ से जो भी S मिलेगा ना, उसको आप कैलकुलेट करना 2n/ उसको इक्वेट करना 2n/249 से। कैलकुलेशन ऐसा आएगा कि इजिली कट हो जाएगा, यहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो यू विल बी डूइंग इट। चलो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, आफ्टर दैट, और व्हाट यू से। इज देयर मोर क्वेश्चंस लेफ्ट? लेट मी चेक। नो, दिस इज द लास्ट लेफ्ट एक्चुअली। सो यहाँ भी तुम्हारा गैल्वेनोमीटर का ही क्वेश्चन है। ओनली थिंग इज कि यहाँ पे हमें आई को निकालना पड़ेगा, ठीक है। एंड दैट यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर वाला इक्वेशन जो हमने पढ़ा था, k थीटा इज इक्वल टू NIAB। सो मैक्सिमम Ig का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज गिवन, दैट इज 0.2 रेडियन, ठीक है। सो यहाँ से तुम्हें Ig मिल जाएगा। इफ यू नो Ig, अगेन यू कैन यूज द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड यू कैन कैलकुलेट वॉट एवर इज गिवन, ठीक है। तो दिस इज हियर। कल के क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग कैपेसिटर, सो वी विल बी डिस्कसिंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन। सर्किट्स को डिस्कस करेंगे जहाँ पे C भी होगा, R भी होगा। तो टुमारो क्लास में मैं कोशिश करूंगी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने के लिए। एल को भी लाइक व्हाट इज दैट, AC को भी इंक्लूड करने का कोशिश करूंगी। एंड करंट में तुम्हें और क्या जानना है? करंट में और कुछ वैसा एज सच नहीं जानना, बट हाँ, प्रैक्टिस तुम लोग कर लेना सर्किट का प्रैक्टिस बिल्कुल करना, कि हम सीरीज पैरेलल में कैसे कंबाइन करते हैं। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, वर्टिकल सिमेट्री का क्वेश्चंस देख लेना एक बार। अगर क्लियर नहीं है तो कल के क्लास में मैं एक काम करूंगी, पहला 2 क्वेश्चन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सिमेट्री के क्वेश्चन से इंक्लूड कर लूंगी, ठीक है, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन कि ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। डन है। एंड ऑल्सो देर इज वन मोर थिंग कि तुम्हारा जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं होता है, देन हाउ टू कैलकुलेट करंट और आर इक्विवेलेंट इजिली, स्टार डेल्टा मेथड जो भी होता है। सो अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए लिख दूं तो चीजें ऐसा है, हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड स्टार डेल्टा मेथड, ठीक है। ये 3 चीज ना आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट आता है और मे बी तुम्हें इजिली दिख जाए इफ यू नो दिस थिंग्स,
दिस इज बेसिकली फॉर अनबैलेंस्ड बीटा स्टोन ब्रिज, क्योंकि बैलेंस्ड होता है तब तो हमें सीरीज पैरेलल दिख जाता है ना, लेकिन अनबैलेंस्ड है तो वो सीरीज पैरेलल में है नहीं, देन आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? सो दैट वी डू बाय स्टार डेल्टा मेथड। ठीक है, बट क्वेश्चन ज्यादा मुझे दिख नहीं रहे थे, दिखे ही नहीं इनफैक्ट, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, सो लेट्स मीट टुमारो। डन है? एनीवन एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो बता दो। नहीं है, चलो ठीक है। चलो ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छे से रहो और क्वेश्चंस किया करो, हाइड्रेटेड रहो, खाना सही से लाइट एंड गुड खाओ और प्रैक्टिस करो। ठीक है।